वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम पे। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड फुल बूमा मचा रहे होंगे। तो आ चुके हैं वापसी हम एक और कैरेक्टर की स्टोरी लेकर। आज हम नाहिदा की स्टोरी करने जा रहे हैं कंटिन्यू। एक्ट 2 करेंगे आज हम। और एक्ट 2 में मतलब जो भी रहेगा नाहिदा की स्टोरी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। यो व्हाट्सअप शेडो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑल गुड ऑल गुड, व्हाट इज़ अप। और ये इनकी ये क्या है, डाउनलोड को कुछ तो आया था, कुछ एमबी का 17-18 MB का कुछ तो आया था। उसके बाद ये वेरीफाइंग फाइल होने लगा। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि आज थोड़ा बाहर गया हुआ था मैं काम से, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गया। और कल भी सुबह तो मैं मतलब आज सुबह मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए रात को मैं जल्दी सो गया था, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया रात को भी। बट अभी हम आ गए हैं, आज स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। बस ये हो जाए भाई। क्या इतनी कम एमबी का और इतनी वेरीफाइंग फाइल्स इतनी सारी है। ओके, हो गया हो गया हो गया भाई। दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं इन्होंने। हम्म। नाहिदा का एक्ट 2 हमें इसलिए भी करना है क्योंकि हमें एक बॉस से अनलॉक हो जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि वो बॉस का मटेरियल तो बहुत चाहिए है कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने में, है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पर काम करना पड़ेगा। कि वो चेक कर लेता हूँ मैं, स्टोरी कौन सी है वो। मैंने अनलॉक तो कर दी है वैसे तो। क्वेस्ट, ये वाली थी ना, वह चेक कर लेते हैं। यही वाली है, सैपेंटिया ओरोमासिस, ये वाली है। चलो चलते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आज भाई एक्ट 2 में। बस वो ड्रैगन जो भी है वो बॉस खुल जाए। और हाँ, बीच में शायद हो सकता है कि मैं जा भी सकता हूँ अगर कुछ काम आ गया मुझे तो इसीलिए हो सकता है कि स्टोरी बीच में ही रह जाए। पर जितनी हो सकती है हम उतना कर ही लेंगे। और आज रात में भी स्ट्रीम नहीं हो पाएगी Navigating the गाइस world क्योंकि is a whole थोड़ा सा lot काम easier रहेगा। with a few different identities to choose from. तो इसीलिए Need me to come up with some for you? थोड़ा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। स्टोरी देखते हैं अब। Hey, isn't that Nahida? नाहिदा ही तो है। Crap! I didn't think we'd run into you here. अरे डायरेक्ट ही मिल गया, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। लोगो भाई ने बताया कि रेडिन बैनर आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? मैं तो उसी ही पुल करूँगा। बिल्कुल शैडो भाई, Oh, हम भी hey करेंगे। there. It's been a while, hasn't it? What have you बस two थोड़ा been up टाइम to? है उसको अभी आने में। थोड़ा क्या, अभी तो बहुत टाइम है। सेम ओल्ड एडवेंचर एंड स्टफ। Seems like you've been enjoying yourselves. बिल्कुल How about भाई। you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. उसके लिए 80 विशेस करूँगा। अरे 80 विशेस पे ही तो है ना सीन। बट लक रहेगा तो I उससे पहले noticed ही that I have मिल some जाएगा। blurry memories after saving Ermin's soul. एक साथ ही कर लेंगे, अगर आया तो देखते हैं। I almost feel मज़ा like आएगा। there's still something extremely important I मैं need भी to करूँगा, do, हावलट भाई भी करेंगे। but I can't remember what it is. और जहाँ तक मुझे याद है ताशु भी करेगा। और लोग करेंगे, बहुत लोग हैं। Hmm? What is that? शोगन के लिए तो बहुत लोग हैं लाइन में। सब करेंगे भाई, पुल मज़ा आएगा।
It's probably the effect of Irmin's Don't worry, we'll help you remember. Feel free to fill Thank you so us much. in. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. लास्ट टाइम हमने इसकी स्टोरी की थी तो हमें वो मिला था ना, वांडरर. Ooh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. It's most likely something that Greater Lord Rakudavata left behind. Traveler, do you have any ideas? I don't know, but You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. कि ये क्या है? Hey, फंगस, get हाइड्रो out! फंगस. You shouldn't be around here! हैं? I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? ये फंगस से बात कर रहा है भाई. इतना वियर्ड लग रहा है ये चीज. Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. अबे ये समझती है Seems उसकी that it भाषा. wants us to follow it. Okay. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can Ooh. feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, Okay भाई कुछ कुछ तो fungi are खतरनाक है. kinda cute, हो रखा है. but It would not hurt to take a look. that's true. Okay, let's go take a look. All right, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. Humans are like. After all, सही they बात है. can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. भाई ये आरा नारा क्वेस्ट में मजा आ रहा है. शेड भाई बिल्कुल किसने बोला नहीं आता. Humans think sometimes. बहुत मजा आता है. That's what I meant by shared emotions. Take it easy. अरे ये क्या हो गया भाई? एक और छोटा सा पड़ा हुआ है भाई. ये क्या हो गया इसको? ये हेल्प के लिए बोल रहा था. अरे कुछ नहीं भाई, मेरे को लग रहा है ये उल्टा हो गया चलते चलते ना, सीधा नहीं हो पा रहा और कुछ नहीं. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. अरे भाई अनकॉन्शियस हो गया. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Family Nahida है भाई here पूरी to help इनकी. its family member. Probably. Although fungi Fungus are की. simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. राघव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. क्वेस्ट आर बोरिंग, स्किप कर देते हैं हम. अरे तो वही बात है ना, आप स्किप कर देते हो. मेरे को तो स्टोरी में ही मजा आता है ना, वही तो बात I'll है. take a look. मैं थोड़ा I समझने should की be कोशिश able to करता help हूँ. if it's just a common illness. मेरे लिए वो स्टोरी मेन पार्ट रखती है, मतलब सारी चीज़ों में. What is it, Nahida? Strange. Very वरना इस गेम का strange. मुझे नहीं लगता कि कोई और पॉइंट बनता भी है. मतलब क्या ही है बताओ. This fungus didn't मेन develop तो from the स्टोरी है इसकी. spore. It's an elemental life form. मैं अगर वैसा बैटल वाला सीन होता ना कि हम 1v1 बैटल है या कुछ है ऐसा एरिना टाइप का, तो भी मज़ा आता. An elemental life form? Yes.
Although the fungi you normally see are capable हम of आपस using में फाइट ले elemental रहे होते हैं अलग powers, अलग कैरेक्टर से. they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. अरे कुछ नहीं भाई, इसकी तबीयत खराब हो गई है, बुखार है इसको, गोली खाएगा ठीक हो जाएगा. इतना मज़ा आ रहा है कि मैं उसे छोड़कर फाउंटेन की स्टोरी कर रहा हूँ. अरे भाई, स्पाइरल एबिस क्लियर 12 Exactly. 3 करो. This is very interesting. I've never seen anything अच्छा, like it. पर वो क्लियर अभी So कैसे this होगा, is अभी a देखते हैं. first even for Nahida. ड्रैगन भाई, क्लियर अभी कैसे होगा बताओ. But that's अभी not तो बिल्ड all. है कैरेक्टर, ठीक है, There's a मतलब उतने तो large है बिल्ड. void within its elemental power. देखना पड़ेगा. 36 स्टार्स फुल. 36 The स्टार्स void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. देख लो भाई, रिवाइव कर दो उसको. नॉक पड़ा है बंदा. रिवाइव रिवाइव मिल रहा है, रिवाइव मिल रहा है. अरे भाई, वाह, ये क्या बात है. My power was compatible. Looks like everything is fine now. ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा Lord of सिग्नल भेज Dendro. रहे हैं. हाँ? Is it really the Lord of Dendro? अबे बोलने लगा भाई, ये Oh, बोलने I can't लगा. believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. क्रिएचर नेक्स्ट टू यू. It can talk? Oh, भाई I didn't मेरा भी बिल्कुल expect ऐसा ही such a रिएक्शन था, strange बिल्कुल ऐसा ही. creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. And Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... क्रिएचर भी भाई शौक में है कि ये बात कर सकती है. इसके तो हर कोई मजे ले लेता है भाई. इसको अभी पता नहीं क्या ही है, लिटिल क्रिएचर, I am चिड़िया, not yet able to पता नहीं क्या evaluate क्या ही an बोल देते हैं organism's इसको. intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. अरे भाई, Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? there's no need to start worrying about that all of sudden. You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. देख लो भाई, मुंह क्या क्या काम कर सकता है, इनको पता है. इनसे सीखो थोड़ा, So समझो. a creature may not speak even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but अरे वाह. completely different interiors, just Flex. like fungi and slimes. फ्लेक्स कर रहे हैं भाई, दोनों फ्लेक्स कर रहे हैं. दोनों फ्लेक्स कर रहे हैं कि तुम जो कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं, हम भी उड़ सकते हैं. ओ भाई, Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. एकेडेमिया से पढ़े लिखे फंगी है भाई. You're not a fungus, are you? That's correct. What? This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. अरे स्ट्रेंज वॉइस, ये अलग ही यूज कर Me, सकता है, me, मतलब ऐसा me, कुछ. me, me. ये क्या बोला इसने, कोड वर्ड है. समझ गया वो. It says that it's very thankful for your help. अच्छा, बढ़िया है भाई. तुमड़ी में लेके जाएंगे बात करने के लिए, ये I जगह was अच्छी नहीं है. confident that I knew of all the creatures in Tibet. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. अरे ये दूसरे गोला के हैं भैया, ये दूसरी गोला के हैं.
ये आए हैं वहाँ दूर से। My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the खुश तो लग रहे हैं apocalypse भाई ये। came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. आज नाइट में लाइव आओगे क्या? आज वही है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। आज थोड़ा सा काम है और मैं लेट हो जाऊँगा रात में, तो वही है, थोड़ा थक भी जाऊँगा, बाहर जाना है, भाई लोगों के साथ थोड़ा सा काम है, We were तो victims of the apocalypse. वही है। Yet, in time, we also became the apocalypse itself. इसीलिए The मैंने सोचा कि स्ट्रीम कर लेता हूँ, कि अभी टाइम था मेरे पास और फिर जाना पड़ेगा, तो वही है। I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. आज आप लोग ग्राइंड करना रात में सब लोग मिलके डिस्कॉर्ड पे, मस्त, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं अगर टाइम रहा तो मैं भले ही स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, बट हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, लेट आऊँ, बट हो सकता है, मतलब स्ट्रीम तो नहीं करूँगा, Don't worry, बट we'll मे बी listen. आ जाऊँ, Please वैसे आ जाऊँगा continue. रात I को। was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. और विद इन नॉलेज। Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. पानी से भरे से लग रहे हैं, मतलब ये कैसे हो सकते हैं भाई डेजर्ट Yes, एरियाज में? how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was. I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge. That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. अच्छा, I was एक्सपेक्टेड नहीं था unable इसको। to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll Okay. leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. आरा नारा भाई काम में आएंगे भाई। Give me a moment. I'll contact them right now. ओके, ये कैसा कांटेक्ट है भाई? ओहो, न्यू टेक्नोलॉजी भाई, न्यू टेक्नोलॉजी। That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. ओके, Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises.
हेलो हेलो शिव, वेलकम टू द स्ट्रीम। स्वागत है आपका। क्या लगता है 20 दिन में 16,000 प्रीमोस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं शैडो भाई। कुछ जो चाहो तो हो सकता है कुछ भी। The moment I saw you when I awoke, अगर I had a feeling you were here because of the agreement. करने को तो बहुत कुछ है आपके वर्ल्ड में, तो काफ़ी कुछ होगा। अभी आपने बहुत सारे क्वेस्ट भी नहीं किए हुए हैं ना, तो आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब करने के लिए। मेरे पास भी काफ़ी मतलब वर्ल्ड तो मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। अभी स्टोरी स्टोरी कर रहा हूँ। सोचो, कैरेक्टर स्टोरी है आपके पास अभी, आर्कन स्टोरी है, आर्कन क्वेस्ट है आपके पास अभी, फाउंटेन वाला कर रहे हो उससे मिलेंगे। और उसके बाद आरा नारा अगर कंप्लीट कर लोगे तो उससे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। Hmm? समझ रहे हो? तो आराम से हो Agreement? जाएंगे इजीली, उससे You पहले ही हो might जाएंगे। not remember, और but फिर this is इवेंट a भी तो आएंगे prophecy that we बैनर पे। deeply believe in. That the Lord of Denro will bring us home once the catastrophe comes to an end. तो इवेंट आएंगे, वो भी अलग है, और कुछ वो अपडेट के लिए जो अपडेट के बाद भी देते हैं प्रीमोस, वो भी मिलेंगे आपको। सोचो, इजीली हो जाएंगे आपके पास, ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। Ah, I see. I. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. कैरेक्टर स्टोरी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। वही ना शेडो भाई, कैरेक्टर स्टोरी स्टार्ट करोगे, अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी करोगे, वहाँ पर आपको क्वेस्ट में मिलेंगे। जब पूरा क्वेस्ट हो जाएगा और वहाँ पे चेस्ट भी मिलेंगी बीच बीच में आपको, तो वहाँ से मिल जाएगा। बहुत कुछ है आपके मतलब, अभी तो वर्ल्ड ही आपका नया है। समझ रहे हो? और एक्सप्लोरेशन तो अभी आपने किया भी नहीं है, ज़ीरो है आपका एक्सप्लोरेशन देखा जाए तो वर्ल्ड का। तो आप वहाँ पर चेस्ट खोलोगे, क्या बोलते हैं उनको, कौन सी चेस्ट होती है वो, बड़ी वाली जो चेस्ट होती है ना, उनमें से 10-10 करके वो भी निकलते हैं अलग से। और लॉगिन वाले भी अगर आप लोगे रिवॉर्ड्स, तो वो भी हो जाएगा। आप ही की यहाँ कर रहा था C2 भाई। क्या आपकी याद याद कर रहे थे, ऐसा बोल रहे हो क्या? देव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके, ये स्टार्ट हो गया है क्वेस्ट। क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी सी बातचीत की थी हमने इनसे, और अब ये, अरे ले लो भाई। इनकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे आज हम। आप ही को याद कर रहा था, अच्छा। थैंक यू देव भाई, थैंक यू। There's something that और I'm very concerned about. वही है कि थोड़ा सा, 1 मिनट गाइस, कॉल आ गई है, 1 मिनट देना बस मुझे। चलो गैस, बैक थोड़ा सा जाना पड़ेगा गैस, थोड़ा सा ये स्किप कर देते हैं ना ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बाद में। ठीक है, अभी थोड़ा काम आ गया है। यप यप, थोड़ा मिस टाइप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 144, ये क्या है शेडो भाई? न्यू बैनर पुल कर रहे हो क्या? न्यू बैनर पे क्या मेरे से पूछ रहे हो क्या? अच्छा, रेडन के लिए, ओके ओके, शेडो भाई से, शेडो भाई से। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट क्रिस्टल? Yes. I didn't mention it just now. थोड़ा The जाना पड़ेगा गाइस, elemental बस power ये inside the मैं crystal कर is दूं एक बार थोड़ा completely सा। identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland.
The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. I will just have to continue. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. ओके वो घर भेजने की पूरी तैयारी है, जो तो है। चलो गाइस, अभी यहीं पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें। मुझे लगा था कि नहीं आएगा कॉल, बट जाना पड़ेगा। The चलो, road here is a little rough. I'll lead क्या the बोल way. रहा है भाई? Don't worry, Paimon can handle any road. अच्छा, Enemies! You're up, traveler! एनिमीज? अबे यहाँ तो कोई एनिमीज है ही नहीं। चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। सायोनारा, बाय बाय शेड भाई, बाय बाय सभी को। क्या करें, थोड़ा सा आ गया है काम, बट देखते हैं। Honey, I'm perfect. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They can weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10.